Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB chemistry classes. FFB chemistry classes is my YouTube channel. So please, for the study, all of you must join FFB YouTube channel. FFB live chemistry class, first year and second year. Now, welcome to all of you, and we start a new topic of chapter S block element, that is alkaline earth metals. Alkaline earth metals are the elements of second group of periodic table of the S block elements. तो इसके पहले के क्लास में हमने एल्कलाइन मेटल्स के बारे में बताया था और उसके बाद लास्ट के क्लास में हमने कंपाउंड्स ऑफ सोडियम जो कि इम्पॉर्टेंट एल्कली मेटल है उसके कंपाउंड्स के बारे में बताया था। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट थे वो सारे जो कि एस ब्लॉक में रखे गए हैं। इस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, एक 13 और 14 ग्रुप। तो आज हम नहीं नो सॉरी थर्ड एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में है एल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप में है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आज की क्लास में हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। Now, today's topic of your study is S block elements and alkaline earth metal. Alkaline earth metals are the elements of group second, and these are known as alkaline earth metal and including in the S block of the periodic table. Now, position of alkaline earth metals in periodic table। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इस तरह के चैप्टर में वो यही होता है कि पोजीशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। The group second day of periodic table consists of 6 elements. First is beryllium है, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। These elements are collectively called as alkaline earth metal and group second A is known as alkaline earth group. The oxides of three principal members, calcium, strontium and barium, were known much earlier than the metal themselves. These oxides were alkaline in nature and existed in the earth and were named alkaline earth. The metals, when discovered, were also called alkaline earth. This term is now applied to all 6 elements of group second A. The first member, beryllium, is less active than the other member, shows more abnormal properties like lithium in first A group. However, it shows resemble with aluminium
that is diagonal relationship. The last member, radium, is a radioactive in nature. Each member of this group occupy a place just after the number of first A group in various periods of periodic table except first period. तो फर्स्ट डे में एलिमेंट थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम एंड ट्रांशियम, जिसकी स्टडी कर चुके हो पिछले क्लासों में। उसके बाद है सेकंड में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है ये दिए हुए, कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। The members of this group show a marked resemblance in their properties and possess same electronic configuration. There is gradual gradation in the properties with the increase of atomic numbers. This justifies their inclusion in the same group of periodic table. The main properties are of this group is इस तरह से ये फर्स्ट ए ग्रुप है, बीच में सेकंड ए ग्रुप और इधर थर्ड ए ग्रुप। तो और ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान इस तरह से ऐड है। ये सेकेंड ए ग्रुप में के जो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड लास्ट मेंबर रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव मेंबर। Now, abundance and occurrence. Alkaline earth metals were reactive elements and hence do not occur free in nature. Beryllium is not very abundant and also it is difficult to extract. It is found in small quantity as silicates, minerals, beryl and phenacid sites, that is Be2SiO4, and this is this. Magnesium and calcium are found in abundance in nature. Magnesium is sixth most abundant element in the earth crust, that is 2.76%. Magnesium also occurs about 0.13% in seawater. The important minerals of magnesium are magnesite, MgCO3, dolomite, MgCO3.CaCO3, carnellite, KCl, MgCl2.6H2O, ipsomite or ipsom salt, that is MgSO4.S7H2SO4, this is hydrated magnesium sulfate भी कह सकते हैं। Asbestos, CaMg3CiO3 Kieserite, that is this MgSO4.H2O, here 7H2O, either H2O. Besides asbestos, magnesium occurs in wide range of silicates mineral such as olivine, talc, chrysolite, and mica. Calcium is the fifth most abundant element in the earth crust at 4.66%. It occurs throughout the world in many common minerals. The common minerals of calcium are limestone, chalk, calcite, marble और आइसलैंड स्पार, जिप्सम। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चाक, कैल्साइट, मार्बल और आइसलैंड स्पार, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड जिप्सम कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। उसके अलावा फ्लोस्पार, CaF2, fluorapatite, that is Ca3PO4 whole thrice point CaF2, anhydrides, that is CaSO4. Strontium and barium are less abundant but are well known because they occur as concentrated ores. The important minerals are for strontium, silicite and strontianite, that is SrCO3 and SrSO4. For barium, barytes or heavy spar, that is BaSO4, and whiterite, that is barium carbonate. Radium is extremely scarce and is radioactive. Minerals of uranium such as pitch, blende, carnotite, etc. consist of minute quantity of radium. It was first isolated by Pierre and Marie Curie from
pictolate. तो all the metals of the alkaline earth elements सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जाना इसमें जो है कि मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके मिनरल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस किन मिनरल्स के फॉर्म में ये मिलती हैं ये इसमें देखा है। एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट बाय मास। बेरिलियम रिलेटिव एबंडेंस 51, एबंडेंस परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ है बेरिलियम 0.0002, मैग्नीशियम 2.7 इधर रिलेटिव एबंडेंस है, कैल्शियम 4.6 यानी कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट में, स्ट्रांशियम 0.384 एंड बेरियम 0.390। Now electronic configuration of second A group. Element of second A group or alkaline earth metal beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, क्लियर है। सबके एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं है, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी एस सब शेल में, यानी एस ब्लॉक में रखने का रीज़न क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस सब शेल में। बेरिलियम का 1s2 2s2, उसके बाद मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ ये नियॉन के बराबर हो जाता है इतना कॉन्फ़िगरेशन जो नियॉन लिखा हुआ है, और 3s2 लास्ट में। इसी तरह कैल्शियम, अब यहाँ हर एक में क्या हो रहा है कि एक शेल बढ़ जा रहा है, या 4s2 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले का आर्गन के बराबर है। इसी तरह स्ट्रोंशियम में 5s2, फिर बेरियम में 6s2, यानी हर जब अगला एलिमेंट आता है तो उसके पास एक शेल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एस ऑर्बिटल में। यहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, S7s2 लास्ट वाले एलिमेंट में। तो इन सब के इनर्ट गैस को जहाँ तक इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख देते हैं, उसके बाद सबसे बाहर की शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The outermost shell of these elements have 2 electrons and the penultimate shell contains 8 electrons except the first member which contains 2 electrons. तो यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो कि सबके पास जो पेनल्टीमेट शेल है उस पर 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ फर्स्ट मेंबर के पास जो है पहले शेल में 2, दूसरी में 2, क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। Since the last electron enters ns orbital, these are s block elements. Beryllium shows somewhat abnormal properties as its electronic configuration is slightly different than the rest of the members. Because of their similarity in electronic configuration, NS2, they are included in the same group, that is first, second A of the periodic table, and closely resemble each other in the physical and chemical properties. Now the physical, तो क्वेश्चन इस तरह की जो चीज़ें अभी पीरियडिक टेबल में पोजीशन डिस्कस की, तो क्वेश्चन अक्सर आता है कि इनको सेकेंड ए ग्रुप में पीरियडिक टेबल में क्यों रखा गया, तो यही सारे रीज़न उसमें दिखाए जाएंगे। उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसके बारे में हम अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। Alkaline earth metals are all silvery white metals. They have grayish white luster when freshly cut but tarnish soon after their exposure in air due to surface oxidation. They are soft in nature but harder than alkali metals because metallic bonding is stronger than first A elements due to possession of 2 valency electrons. However, hardness decreases with increase in atomic number. These elements are malleable and ductile but less than alkali metals. Second is property is atomic and ionic radii. The size of the atom increase gradually from beryllium to radium on account of the presence of an extra energy shell at each step.
The atoms are large but smaller than corresponding first day elements since the extra charge on the nucleus attract the electron cloud inwards. Their ions also large and size of the ions increase from beryllium to radium. The ionic radii barrier की 1.12 फिर मैग्नीशियम की 1.60 ये इंक्रीज कर रही 1.97 फिर 2.15 स्ट्रॉन्शियम की इस तरह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है आयनिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप इस तरह से इंक्रीज कर रही है एटॉमिक वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर increases. Now, ionization energies and electropositive character. The first and second ionization energies of these metals decrease from beryllium to barium. The second ionization energy in case is higher than the first. Nearly double the first ionization energy. The first ionization energy beryllium की 9.32 है जबकि second ionization energy 18.32. इसी तरह मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 7.62 जबकि इसकी डबल हो जाती है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबकी ज़्यादा है लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं यहाँ से क्या हो रहा है ये डिक्रीज करती जाती है यहाँ भी यही पोजीशन है और यहाँ the ionization energy of last member radium is slightly higher than that of barium and it is difficult to explain this anomalous behavior. Although the ionization energy of these elements are higher than those of alkali metals, yet these are sufficiently low to make these atoms to lose two electrons of their valency shell to form M2 plus ions and achieve the inert gas configuration. These metals are thus strongly electropositive in nature but less than corresponding alkali metals. The electropositive character increase from beryllium to barium. Metallic character and reactivity are directly linked with the tendency to lose electron or electrons that is the electropositive nature. Thus these character increase gradually from beryllium to barium. This is the increasing order of electropositive nature. Metallic character also increases from beryllium to radium and reactivity of the metals also increases. The second ionization energy values of alkali metals are higher than those of the alkaline earth metal. द रीज़न क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में इसको यूज़ करने की टेंडेंसी होती है जबकि एल्कली मेटल्स के जो पेनल्टीमेट शेल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है दिस इज़ द रीज़न वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एल्कली मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल. The second electron in the case of alkali metal is to be removed from monoviolet cations which has already acquired an inert gas configuration. While in alkaline earth metal, the second electron is to be removed from cations having inverse configuration which has yet to achieve the stable inert configuration. Thus, it is difficult to remove second electron in group first element than in group 2 elements or more energy is required for removing second electron in case of alkali metals than alkaline earth metals. Now oxidation state all shows stable oxidation state plus 2. Amongst alkaline earth metals, beryllium has the highest ionization energy, the least electropositive in nature. Thus, beryllium has a maximum covalency to form B2, maximum tendency to form B2 plus ion, and hence a number of compounds of beryllium are covalent in nature. Now, hydration of ions and hydration energy. The M2 plus ions of alkaline earth metals are extremely hydrated to form hydrated ion and during hydration a huge amount of energy called hydration energy is released.
The reaction is M2 plus जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रेशन होगा इसका, इस तरह से हाइड्रेटेड आयन बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी. The degree of hydration and amount of hydration energy decrease as the size of the ion increase from beryllium to barium ion. ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन. बेरिलियम की 570, फिर ये डिक्रीज करती जाएगी. मैग्नीशियम 2+ के लिए 460, यानी ये आसानी से हाइड्रेटेड साल्ट बना लेंगे. इसी तरह से कैल्शियम की 395 किलो कैलोरी पर मोल, स्ट्रांशियम की 355 एंड 305 बेरी. The hydration energies of alkaline earth metal ions are higher than those of alkali metals ion, and thus the compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than alkali metals. Magnesium chloride and calcium chloride exist as magnesium chloride and MgCl2 0.6H2O and calcium chloride 0.6H2O respectively, while chloride and potassium chloride exist at NaCl and KCl. The ionic mobilities or ionic conductance of these ions increase from beryllium to barium hydrated ion. Now, electronegativity. The tendency to attract electrons is low. The electronegativity values are thus small and decrease from beryllium to radium. The values decrease करती जाती है. Now, conductivity on account of presence of two loosely bound valency electrons per atom, which can move freely throughout the crystal lattice. The alkaline earth metals are good conductors of heat and electricity. Now, flame coloration. In case of calcium, strontium, barium and radium, the electrons can be excited by the supply of energy to higher energy level. When the excited electrons return to the original level, the energy is released in the form of light. In beryllium and magnesium, the electrons are tightly held and hence excitation is rather difficult. Thus do not show flame coloration. Calcium, barium, strontium, and radium impart characteristic color to the flame. कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन होता है, बेरियम ग्रीन और रेडियम का क्रिम्सन. Now, color and magnetic properties. In the divalent ion have noble gas configuration with no unpaired electron. Their compounds are dimagnetic and colorless unless the anion is colored. The metals are also dimagnetic in nature as well as the orbitals are doubly occupied in their atoms. Now come on the chemical properties. First is reducing nature. रिड्यूसिंग नेचर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं. द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू बाईवैलेंट कैटायंस. M2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके तो M2+ आयन बनाता है. ये M क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई सा भी हो सकता है. Hence, they act as strong reducing agent. The reducing nature increase as the atomic number increase. Strength of a reducing agents is linked with the value of oxidation potential. The values of oxidation potential increase from beryllium to barium. Hence, the strength as a reducing agent increase in the same order. Oxidation potential बेरिलियम से मैग्नीशियम बढ़ रही है जिससे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनकी बढ़ती जाती है क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होते जाते हैं. द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर लोअर देन दोज ऑफ द alkali metals. Hence, the alkaline earth metals are weaker reducing agent than alkali metals. The reason for the lower value of oxidation potential is due to high heat of atomization and ionization energy. Now, extraction. As alkaline earth metals like alkali metal are reactive and reducing agent, these cannot be extracted by ordinary chemical reduction method.
The metals cannot be prepared by electrolysis of aqueous solution of their compounds as they react with water. These metals are best isolated by the electrolysis of their fused metal halides containing sodium chloride. The purpose of adding sodium chloride is to lower fusion temperature and to make the fused mass as good conductor of electricity. Now reactivity towards water. Calcium, strontium, barium and radium decompose cold water readily with evolution of hydrogen. वाटर से रिएक्शन करके ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट होती है. Magnesium decomposes boiling water, but beryllium is not attacked by water even at high temperature, as its oxidation is potential is lower than the other member. Now, reactivity towards atmosphere. Except beryllium, these metals are easily tarnished in air as a layer of oxide is formed on their surface. The effect of atmosphere increase as the atomic number increase. Barium is powdered form burst into flame on exposure to air. Now reactivity toward acid like alkali metals. The alkaline earth metals freely react with acid and displace hydrogen. Reacts with sulfuric acid to displace hydrogen, form sulfate, and reacts with HCl to liberate hydrogen and forms metal chloride. Beryllium behave differently as it dissolves in caustic alkalis, also with liberation of hydrogen. सीधे वाटर से रिएक्शन नहीं करती बल्कि बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व होकर के सोडियम बेरिलेट बनाती है और हाइड्रोजन लिबरेट करती है. एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर non metals. They directly react with non metals at the appropriate temperature. First reaction with hydrogen, except beryllium, all combine with hydrogen directly to form hydrides of the type MH2. When heated with hydrogen, it forms metallic hydride. BH2 and MgH2 are covalent in nature, while other hydrides are ionic in nature. Calcium, strontium, and barium hydrides liberate hydrogen at anode on electrolysis in the fused state. Ionic hydrides are violently decomposed by water, evolving hydrogen. Calcium hydroxide is technically called hydrolith and used on large scale for the production of hydrogen. Calcium hydride reacts with water to form calcium hydroxide and liberate hydrogen. Beryllium hydride is not obtained by direct combination of beryllium and hydrogen. It is formed by reacting beryllium chloride with lithium aluminium hydride. Beryllium chloride reacts with lithium aluminium chloride, form beryllium hydride, and LiCl and AlCl3 is also formed. It is polymeric, that is BeH2 whole twice n, possess hydrogen bridges. Three center bonded are present in which banana shaped molecular orbital covers the atom BHP and contains two electrons. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है BeH2 का आपस में ये जुड़ करके. The stability of the hydride decrease with increasing atomic number because the metallic nature of the elements increase. Now reaction with oxygen, formation of oxides and hydroxide. Except beryllium and radium, these elements when burned in oxygen form oxides of type M4. तो इसमें बेरियम और रेडियम डिफरेंटली रिएक्शन देते हैं, बाकी सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MO टाइप ऑक्साइड बनाते हैं. बेरिलियम मेटल इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव एंड डज नॉट रिएक्ट बिलो 600 degree centigrade, but the powder form is much more reactive and burns brilliantly. The element magnesium burns with dazzling brilliance, evolving a lot of heat. Barium and radium being highly electropositive form peroxide.
Beryllium reacts with oxygen to form barium oxide first, and at high temperature it forms barium peroxide. Thus, the affinity for oxygen increase on moving down the group. Beryllium oxide is usually formed by ignition of the metal, but the other metal oxides are usually obtained by thermal decomposition of the carbonates. Except beryllium oxide, which is amphoteric in nature, other MO oxides are basic in nature as they combine with water to form basic hydroxide. The reaction is highly exothermic. जैसे कि MOH2O से रिएक्शन करके MOH यानी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ M की जगह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम कोई भी होता है, साथ में इवोल्यूशन ऑफ हीट। Basic nature of oxide increase gradually from beryllium to barium. Strontium and barium oxides are strongly basic. एसिड और एम्फोटेरिक होता है बेरिलियम ऑक्साइड, उसके बाद वीकली बेसिक है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बेसिक ना तो वीक ना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड होती है कैल्शियम ऑक्साइड। Beryllium oxide and magnesium oxide are insoluble in water as these are tightly held together in solid state. Now, barium hydroxide is amphoteric, but the hydroxide of other alkaline earth metals are basic. The, the basic strength increase gradually. The solubility of hydroxide increase with increase of atomic number of alkaline earth metals. This is due to the fact that decrease in lattice energy is more than decrease in hydration energy on moving down the group. The increasing solubility can also be explained on the basis of value of their solubility product, which increase from beryllium hydroxide to barium hydroxide. Beryllium hydroxide and magnesium hydroxide are almost insoluble in water. Metal hydroxides, इनके solubility product इसका है 1.6। क्या हो रहा है यहाँ पे लगातार इंक्रीज कर रहा है लगातार बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। The hydroxide decompose on heating. The thermal stability increase from beryllium hydroxide to barium hydroxide. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड H2O देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और H2O देता है, और ये थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है बेरिलियम टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद हेलोजेंस, the alkaline earth metals directly combined with halogens when heated with them. यानी यही हेलोजन ClBr(I) या F हो सकती है, हीट करने पे MX2 यानी MgCl2 CaCl2 इस तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। Beryllium halides are covalent in nature. This is due to small size and high charge of beryllium ion, that is, it has high polarizing power. Action with nitrogen. All alkaline earth metals burn in nitrogen to form nitrides of type M3N2. The age of formation of nitrides decrease from beryllium to barium. This is in contrast to alkali metals where only Li3N is formed. Because the nitrogen molecule is very stable, it requires very high energy to form N3 minus ions. The large amount of energy comes from the very large amount of lattice energy evolved when the crystalline solid is formed. The lattice energy particularly high because of high charge on the ion M2 plus and N3 minus. B3N2 is volatile covalent character, while other nitrides are not volatile as they are ionic crystalline solid. The nitrides are hydrolyzed with water liberating ammonia.
Alkaline earth metal nitrides when reacts with water to form hydroxide and liberate ammonia. Action with carbon, that is reaction with carbides. With the exception of beryllium, other metals when heated with carbon in an electric furnace or when their oxides are heated with carbon form carbides of the type MC2, that is metals reacts with carbon to form FCT3 और मेटल ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगी कार्बन से तो मेटल कार्बाइड बनाती है। इसी तरह मेटल कार्बाइड रिएक्ट करके वाटर से मेटल और हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बनाती है। MC2 metal carbide all have distorted sodium chloride type of structure. M2 replace Na plus and C triple bond C2 minus replace C minus ion. Magnesium carbide or heating change into Mg2C3. Magnesium carbide on hydrolysis evolve propine, that is methyl acetylene. ये है स्ट्रक्चर Mg2C3 प्लस 4H2O। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में ही प्रोपाइन जिसका स्ट्रक्चर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है या मेथिल एसिटिलीन। When beryllium oxide is heated with carbon at about 2000 degrees centigrade, a brick red color carbide of formula Be2C is formed. This on hydrolysis evolve methane and is thus called methanite. Be2C प्लस 4H2O रिएक्शन होता है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन बनता है। It is also ionic but possesses a anti-fluoride structure. Action with sulfur and phosphorus. Alkaline earth metals directly combine with sulfur and phosphorus when heated with them to form sulfides of type Ms and phosphides of type M3P2 respectively. M plus S to form Ms metal sulfide and it reacts with phosphorus to form metal phosphide. Sulfides on hydrolysis liberate H2S, hydrogen sulfide gas, while phosphides on hydrolysis evolve phosphine. तो सल्फाइड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है और मेटल फॉस्फाइड डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके फॉस्फीन गैस बनाती है। Sulfides are phosphorescent. They cannot be precipitated by passing H2S through their salt solution as they are decomposed by water. This is the reaction. Now, nature of oxysalt, that is bicarbonates and carbonates. Bicarbonates of alkaline earth metals do not exist in solid state but are known in solution only. When such solutions are heated, bicarbonate are decomposed with evolution of carbon dioxide. The sodium metal bicarbonate of the alkaline earth metal, when heated, it forms metal carbonate and liberated carbon dioxide and water is formed. Carbonates of alkaline earth metal MCO3 are insoluble in water. These dissolve in water in presence of कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इनको डिजोल्व करते हैं तो ये फिर से मेटालिक बाइकार्बोनेट बनाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप while stability increase. This is evident from the values of decomposition temperatures of various carbonates which increase gradually. Magnesium carbonate when heated, magnesium oxide metal oxide plus carbon dioxide liberate करते हैं। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तब इस तरह का डिकम्पोजिशन होता है। The increased stability is explained on the basis of instability of the oxide with increasing size of the cation and hence the higher carbonates
resist their decomposition. The carbonates are all ionic, but beryllium carbonate unusual because it contains hydrated barium BeH2O whole 4 ion rather than Be2 plus ion. Now sulfate. Alkaline earth metals form sulfates of the type MsO4. These are prepared by the action of sulfuric acid on oxide, hydroxide or carbonates. तो सल्फ्यूरिक एसिड मेटल अर्थराइन एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो सल्फेट एंड वाटर बनता है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड होने पे मेटल सल्फेट बनता है। और इसी तरह कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट प्लस H2O और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। The solubility of sulfate decrease on moving down the group. Copper sulfate is sparingly soluble, while strontium sulfate, barium sulfate, and radium sulfate are almost insoluble. The solubility of barium sulfate and magnesium sulfate are due to high energy of solvation of small Be2 plus and Mg2 plus ion. The values of solubility products which decrease gradually also explain the decrease in solubility or moving down the group. तो यह solubility जो है वो लगातार गिरता कम होता जा रहा है, जिससे कि क्या होता है solubility भी decrease करती जाती है. The sulfate decomposes on heating to give the corresponding oxides. This is the reaction and gives sulfur dioxide and oxygen. The stability increase as basic nature of the metal increase. This is evident from the decomposition temperature. Metal sulfate का decomposition temperature, barium sulfate का 500 और ये लगातार ये बढ़ता जा रहा है, इससे stability increase करती जाती है, जो ये शो करता है कि स्टेबिलिटी सल्फेट की डाउन द ग्रुप बढ़ रही है. Sulfates are reduced into sulfides on heating with carbon. Now nitrates. Alkaline earth metals form nitrates of the type MnO3 whole twice. These are prepared by the action of nitric acid with oxide, hydroxides and carbonate. Nitrates of these metals are soluble in water. On heating, they decompose into their corresponding oxide with evolution of a mixture of nitrogen dioxide and oxygen like this. When nitrate of alkaline earth metal is heated, it forms oxides and nitrogen dioxide and oxygen. Beryllium also forms a basic nitrate in addition to the normal salt. Basic nitrate is a covalent compound. Beryllium nitrate when heated to form basic beryllium nitrate. Now solutions of metal in liquid ammonia. This is very important. Like alkali metals, alkaline earth metal dissolve also in liquid ammonia to form colored solution. Dilute solutions are bright blue in color due to solvated electrons. These solutions decompose very slowly, forming amides and evolving hydrogen. तो पहले मेटल आयन बनता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इधर अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एमाइड आयन बनाता है. अब ये मेटल आयन रिएक्ट करता है एमाइड आयन से, तो वो बनता है MnH2 यानी मेटल एमाइड. When the solution is evaporated, hexaminate MnH3 whole 6 is formed. These slowly decompose to give amides. This is decomposed to give amide, ammonia and hydrogen. Concentrated solution of the metal in ammonia are bronze color. Now formation of amalgams. Alkaline earth metals combine with mercury to form amalgams. Organometallic compounds, both beryllium and magnesium, form an appreciable number of compounds with metal carbon bond.
but only a few are known for calcium, strontium, and barium. Grignard reagents are very important in organic chemistry, which can be used to form a wide variety of organic compounds. इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एल्किल ब्रोमाइड, आयोडाइड या क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनता है एथिल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड या एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड reagent. R is a alkyl or aryl group. Beryllium chloride reacts with Grignard compound forming reacting dialkyls and डाईएरिल्स. क्लोराइड रिएक्ट करके डाईएल्किल एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है. डाईएल्किल्स एंड डाईएरिल्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium can also be obtained by similar reaction. Now, complex formation. Generally, the alkaline earth metals do not form complexes. However, the smaller ions have some tendency to form complexes. Beryllium forms stable complex such as BeF3 whole minus, BeF2 2 minus, and BeH2O 4 2 plus. Complexes of type BeCl2 R2 are formed where R is an ether, aldehyde or ketone with an oxygen as a donor atom. Beryllium is unique in forming a series of stable complexes. Formula दिस टाइप, तो इसके बारे में कंप्लीट स्टडी जब कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीज में जो है पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मैग्नीशियम इज क्लोरोफिल, इन विच मैग्नीशियम इज बॉन्डेड टू द 4 heterocyclic nitrogen atom. Calcium, strontium, and barium form complexes only with strong complexing agent like acetyl acetone or EDTA, etc. Now, difference between alkaline earth metals and alkaline earth metal हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो हम फिलहाल ये प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे ही रोकते हैं क्लास. अगले क्लास में हम ये जो तुम्हारा सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है एल्कलाइन अर्थ मेटल विद एल्कली अर्थ मेटल, ये हम अगले क्लास में इस बारे में डिस्कस करेंगे.